Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 1, characteristics and life processes of organisms. And today I will deliver lecture number 4. So my dear students, today we will differentiate between vertebrates and invertebrates. So by the end of today's lecture, all the students will be able to classify animals in terms of vertebrates, invertebrates with example and analyze the differences and similarities in vertebrates and invertebrates. In the previous lecture, we already discussed about the similarities. Today, we will find the differences between invertebrates and vertebrates. So, my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. Allah has created every living creature from water, and of them are those that move on their bellies, and of them are those that walk on 2 legs, and of them are those that walk on 4. Allah created them. Allah created what He wills. Indeed, Allah is over all things competent. So, my dear students, Allah ताला ने बहुत सारे हशरात या बहुत सारे जानवर बनाए हैं. कुछ जो है वो 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ उड़ते हैं. तो अल्लाह ताला ने इतनी वैरायटी बनाई है एनिमल्स की. सो हमने कुछ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे कि बहुत छोटे एनिमल्स भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, वर्टिब्रेट वाले हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं. सो लेट्स क्विकली रीकैप. हाउ आर दीज 2 एनिमल्स सिमिलर इन फीचर्स. अब आपको 2 एनिमल्स अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. वन इज जेलीफिश एंड द सेकेंड इज फिश. बोथ लिव अंडर द वाटर, पानी के नीचे रहते हैं. बोथ स्विम इन द वाटर, दोनों पानी में तैरते हैं. Both need energy and both feed. Both reproduce, both respire or breathe, and both move from one place to another. So these are the similarities among these organisms. So how are these 2 animals different in features? Now let's quickly talk about how they are different. अभी हमने similarities देखी दोनों की. Now quickly think. You can also pause the video and think about all the differences among them. Very good. This is invertebrate and that is vertebrate. Very good. So my dear students, now you can see 2 again animals on your screen. One is a worm and other is a snake. Now let's quickly about the similarities among them. Both creep, यानी कि रेंगते हैं दोनों. And what are the differences? This is invertebrate, backbone absent, and that is a vertebrate. That means backbone is present. So my dear students, today's lesson is we are going to differentiate between vertebrates and invertebrates. So here on your screen, you can see a lot of vertebrates and invertebrates. Invertebrate, invertebrate, vertebrate, vertebrate, and vertebrate. So that means vertebrate, backbone present, and invertebrate, backbone absent. So my dear students, now quickly open the page in your book where there is comparison between vertebrates and invertebrates. I hope all of you have opened the page in chapter number 1, comparison between invertebrates and vertebrates. So my dear students, invertebrates and vertebrates, they are the animals without the backbone. They have vertebral column. ठीक है. So सबसे पहला difference दोनों में क्या है. और हमेशा remember, जब आप भी differentiate करें और you have to write down the differences or similarities, आपने हमेशा पेज में एक लाइन लगानी है सेंटर में, and then one heading on this side and one heading on the other side, and then write down the similarities or the differences here and here. So my dear students, सबसे पहला difference क्या है कि vertebral column का. ठीक है, एक में absent है, एक में present है. So this has no backbone and this has a backbone. So this is the first difference. देखें, no backbone, there is no backbone in it, और इसका जो है इसके अंदर exoskeleton होता है, and this has a backbone in it. So the next difference is body organization. ठीक है, इनकी body organization जो है बहुत simple होती है. In invertebrates this is a sponge, और जो vertebrates होते हैं उनकी body organization जो है वो complex होती है. They have complex organs and organ systems
and they have a skeleton, proper skeleton inside their body, and there is no inside skeleton, they have an exoskeleton. So my dear students, next, they lack well-developed body, organization or system. And invertebrates, vertebrates have well-developed organ systems such as nervous system, digestive system, and etc. नंबर थर्ड इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन. दोनों के अंदर जो स्केलेटन है वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, डिफरेंट है. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हेयर एन इनवर्टिब्रेट, सो इट हैज एन एक्सोस्केलेटन, जैसे इसका स्केलेटन जो है वो इसकी बॉडी के बाहर है. वेयर एज इन vertebrate, the skeleton is inside the body, it is made up of bones. Invertebrates possess skeleton outside their body, that is exoskeleton, for example snails and insects. Vertebrates have internal body skeleton, that is endoskeleton, and it is made up of bones. Generally they are smaller in size, but some invertebrates attain gigantic size. For example, some of the spiders have gigantic size, that is colossal squid. It reaches the length of 46 feet. So how big it is. Vertebrates are relatively larger in size. जो invertebrates हैं हम इनको usually consider करते हैं और usually होते भी हैं. They are smaller in size. लेकिन कुछ जो invertebrates हैं जिनमें backbone absent होती है, they become huge. काफी बड़ा size ये attain कर लेते हैं, just like the giant squid. ये 46 feet बहुत ज़्यादा होता है, ये इतने साइज में चला जाता है. और जो vertebrates हैं ये यूजुअली बड़े ही साइज के होते हैं. सो डिफरेंस इन साइज. दिस इज अ स्क्विड, ये एक नॉर्मल स्क्विड है, एंड दिस इज अ जाइगैंटिक स्क्विड जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, जो 46 आज तक जो सबसे बड़ा स्क्विड है. दिस इज द बिगेस्ट स्क्विड, और ये बहुत बड़े साइज का होता है. तो स्क्विड जो है दे आर इनवर्टिब्रेट्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा साइज पे चले जाते हैं. So the next difference is in invertebrates, majority of them have compound eyes. Each compound eye has thousands of lenses. So इनकी जो eye है, इनके अंदर compound eye होती है, यानी कि इसका मतलब है कि इनके लेंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, more than one होते हैं. So इन lenses की वजह से इनके different visions होते हैं, they can view very carefully. None of the vertebrates have compound lenses. Humans have single lens in each eye. किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर कंपाउंड यानी कि एक से ज़्यादा, एक आंख में एक ही लेंस होता है, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें अक्सर इनके कंपाउंड लेंसेज होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लेंस होता है. जैसे कि एक मक्खी जो होती है आपकी, हाउस फ्लाई जो आपको रूटीन में नज़र आती है, सो उसकी बल्जिंग आइज होती हैं और इनके जो लेंस होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं एक आई में. सो द नेक्स्ट इज ऑर्गन डेवलपमेंट, इनका वेरी करता है. So eye having single lens, this is the single lens जो कि vertebrates के अंदर होता है, and this is a compound lens. अगर आप इसको, ये आपको दूर से ऐसा नजर आता है, but this is from very close view. अगर आपको देखें आप इसको, तो this is a compound lens, यानी कि एक से ज्यादा इसके अंदर लेंस पाया जाता है. This is it. Okay. Next difference is their mode of nutrition is either heterotopic or parasitic. Examples worms, insects, snails, sponges, etc. So जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या तो हेट्रोट्रोफ है या पैरासाइटिक होता है, यानी कि या ये खुद फीड करते हैं किसी चीज़ के ऊपर या ये किसी दूसरे के खाने को लेकर उसके ऊपर फीड करते हैं. पैरासाइट मीन्स टू फीड ऑन समबडी एल्स, ठीक है. या हेट्रोट्रोफ होता है, ये अपना खाना जो है वो दूसरों से खा लेते हैं. एक ऑटोट्रॉफ होता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, दैट मीन्स दे मेक देयर ओन फूड, एंड हेट्रोट्रॉफ मीन्स they eat on other plants or animals, and parasite means to feed on somebody else. The vertebrates are heterotopic. Examples fish, alligators, birds, horses, frogs, humans, etc. यानी कि ये जो है vertebrates जो हैं they are always heterotroph, यानी कि ये अपना खाना दूसरों जो है वो plants और animals को खाकर जो है they feed on them, and then that's how they get energy. So another difference is different mode of nutrition. So now there is an activity that you will perform. हमने अभी काफ़ी सारे differences पढ़े हैं among invertebrates and vertebrates. Choose one of the invertebrates and one of the vertebrates. Collect its pictures. Search about its features. Fill in the following table. So my dear students, आपको
दो एनिमल्स सर्च करने हैं. वन विल बी इनवर्टिब्रेट एंड सेकेंड विल बी वर्टिब्रेट. ऑल्सो सर्च फॉर देयर पिक्चर्स. और उसके बाद आपने ये जो टेबल है इस तरह का बना के उसको फिल करना है. हाउ इज देयर स्केलेटन, व्हाट इज देयर साइज, व्हाट इज देयर ऑर्गन डेवलपमेंट, व्हाट इज देयर मोड ऑफ मूवमेंट, एंड is there a vertebral column or not. ठीक है, that's how you will fill in this table. This is extremely easy. आप अपने environment में से कोई भी animal जो है वो select कर सकते हैं. For example, a cat for a vertebrate and an ant or a cockroach for the invertebrate. ठीक है, so that is how. Observe them, collect their pictures, have a closer look, and then fill in this table. This is extremely easy. So my dear students, today's wrap up. Vertebral column, in invertebrates it is absent, in vertebrates it is present. Organ development, in invertebrates it is incomplete, whereas in vertebrates it is advanced and complete. So body organization, lack well developed organs and have well developed organs in vertebrates, and the skeleton in invertebrates is exo, whereas in vertebrates it is endoskeleton. So this was the wrap up. This is what we have learned today. For the assessment, you can simply download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, you will write down your name and your roll number here. Differentiate vertebrates and invertebrates in terms of their backbone, body organs, limbs, body size, and position of the skeleton. So here are all the, you can see different vertebrates and invertebrates here. और यहाँ पे पूरा कॉलम लिखा हुआ है. आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को जो है वो इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों को. सो यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो एंड यू कैन कंप्लीट द वर्कशीट. I hope everybody has finished it. So my dear students, now quickly note down your homework. For your homework, solve question number 2 from section C of the exercise. आपकी बुक से आपने question number 2 करना है from section C, and prepare a chart having 2 columns, vertebrates and invertebrates. Paste the pictures of vertebrates and invertebrates you see around into relevant columns. और इसके अलावा आपको अपनी कॉपी के ऊपर या एक चार्ट बनाए आप और उसके अंदर 2 कॉलम्स बनाए, vertebrates and invertebrates. Select pictures of vertebrates and invertebrate animals and paste them in their relative columns. Pause the video and note down your homework. I hope everybody has done it. So my dear students, I hope you have learned all the differences between vertebrates and invertebrates. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.